Welcome to the Zoku Tales. Here we talk about everything from victories to fails. If I had to describe about today's guest, I would say, आओ चलो बात करेंगे और आते रहो ना वापस. Those two Dakhini speaking boys with most relatable content when you scroll through Instagram. Yes, I think you guessed it right about today's guest. Yes, they are Dilaggiya. Moving towards the podcast, we have Dilaggiya. I mean Saad Delvi and Sayyid Harun. I think I mispronounced it. Saad Dalvi, Sayyid Haroon. What was the thought behind this name Dilaggiya and how did you come up with this? Actually, the name was from him. Yeah. When we started the page, we was confused with names. Day before yesterday, like my mom screwed me, and she was like, "Dilaggiya करेंगे क्या तुम्हें घर में होगा?" तो मेरे दिमाग में वो आया. So he came to me. एक आइडिया मिला मुझे. अच्छा है नाम म सुनो क्या नाम है दिल्लगिया भारी है ना कौन दे सो अम्मी दे सो ओ बहुत अच्छा है. One thing, when I hear the name Dilaggiya, it's totally different from other content creators. I don't normally listen Saad Delvi or Sayyid Harun in public. It's always when you go out, it's always Dilaggiya Jari. It's always like Dillaggiyas are going, not just Saad Delvi or Sayyid Harun is going. And talking about next, how did your journey started? How did you expect your first reel to go and how did the shot really go? It was just for fun, not that serious. हमारा प्लान नहीं था कि हमें ग्रो कर देंगे तो चुपके मजाक से करेंगे. Let our friends know about what we do. You know वो टच था सर. And actually बचपन में हमें बनाते थे वीडियोस एक पहले से भी था. हम पोस्ट नहीं करते थे. मैं भी बनाते थे बहुत ऐसा कॉमेडी वीडियोस इच्छा नो एडिट कुछ भी नहीं स्ट्रेट क्या आता कि वो बना देते. Since when do you guys know each other and how are you guys related? This is not only my question, this is the question of all the audience that you have, all the fans that you have. बोल थक गई मैं आदमी को. थोड़े लोग हमको हमें दोस्तान दिखती. Actually we are not brothers also. Then don't just tell me that you are just college mates and you got so close. बहुत अलग रिलेशन है हमारा मेरा भी अरुण का. Like He is my mama and I'm his banja. I personally inquired about you and I was assuming as such the other people कि you guys might be non-identical twins. But when I look at you, it's two non-identical and I think I just assumed that you might be classmate and you just doing it for fun. And that's what public even think about you guys. So can I know what's your age gap? गैप 25 days. इनो बड़े महीने से 25 दिन का छोटा. रिश्ते में इनो बड़े उम्र में भाई बड़ा. Do you guys remember the feeling when your first reel went viral throughout the Bangalore? Actually called him. वीडियो वायरल होगी तो खोजे देखो कितने व्यूज आ कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह that was a success. शायद वो फर्स्ट वीडियो हमारी क्लिक हुई. सो Can I ask what is the number of view count you got? First video was around 15K. 15 से it went 50 100K बढ़ते गया एकदम. नाउ अब शायद it's 500K. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह. Did you guys just tell your parents or family about Dilaggiya or did they get to know after your reel went viral? How was it? And what was their reaction actually? Before they knew. My mom knew and even his mom knew. Okay. But जो एक्चुअली जिनको मालूम होना था वो बाद में मालूम हुआ था. अरुण हमें 30K 40K होने के बाद बोलेंगे घर को सोचे. देन वी सेड ऐसा हमें बना रही है ऐसा वीडियो है. मालूम हो रहा तुम्हारे लोगों के बारे में इनके भी घर में हमारे भी घर में. Were they like you're just wasting your time instead of that you can focus on your studies? What was your parents' reaction towards the name Dilaggiya? How did they actually react to it? They knew दिल्लगिया मतलब they knew the meaning of दिल्लगिया मतलब मजाक. Okay. ऐसा सब they knew. चलो मजाक करते हैं बच्चे and they saw videos also. Did you guys actually plan कि you have to hit such milestones that you have to hit such view count or hit a certain followers?
or it's randomly just like that? At the starting we was having this Ramzan 2024 Ramzan 10K complete करना मेरे को. To be honest, you guys completed 50K in such a short time. अल्हम्दुलिल्लाह. अब इंशाल्लाह ये रमज़ान तक 100K इंशाल्लाह. Hitting 50K is not just easy, and you have hit that 50K milestone with ease. And about hitting 100K, it's your thing how you gonna make them hit 100K as soon as possible. Now coming to your content part, do you guys follow certain schedule format regarding a shoot? Do you guys bulk shoot and bulk produce and just schedule it to your shoot, or it's just like whenever you have time you're just posting here and there? Is it like that? एक्चुअली बिफोर इट वाज लाइक हमें बना लेते थे वीक में, जब टाइम मिलता तब बना लेते, बट नाउ वी ओनली गेट संडेज टू मेक वीडियोज. Will be busy. You guys are still studying, right? And I can't mention which college are you in because of the privacy issues you can face in future. फ्यू ऑफ देम नो थोड़ा हमें कौन सी कॉलेज हारून का बिजनेस सब मालूम. Coming to the downsides, what are the downsides that you might face when your reel goes viral? I mean, the trolls, the negative comments of the people, the hatredness. Have you faced such things? बहुत ज़्यादा हेट मिलता एंड पीपल यूज टू टेल, जब हमें मतलब स्कार्फ पेन को बनाते वीडियोज तो बोलते हैं क्या ये कामा कर ले को स्कार्फ पे लेक बना रही है, वो सब बोलते हैं. Were there any particular days or the moment where these type of negative trolls, comments, even from your friends, family, relatives, or the closed ones, really hit you hard, and you just went through some traumas or something, and you just made up your mind like, I will stop this. It's not my cup of tea or something. Did it actually happen with you? At the starting we was. अभी जो है आदत हो गई, बोलती बोलने के जानते हमें हमारा काम करेंगे. How do you guys overcome these phases, and what motivates you to upload your content on a weekly basis or daily basis, whatever it is? We'll just ignore. वो टाइम नहीं सदमिया को क्या भी बोलती है हमारे बड़े आदमी, काम नहीं सजम बिल्ली का सिर मुंडाया वही था वो है ना. ऐसा कुछ ज़्यादा हमें फोकस नहीं करे इसके बारे में. वी नेवर फोकस्ड एक्चुअली. ये चरंदे नेगेटिव देखे नहीं, हमें हमेशा पॉजिटिव देखते थे. सो वो हम ना मोटिवेट करता था, इनकरेज करता था. जब हमें घर में भी बोले ऐसा ऐसा कमेंट्स आ रहेंगे तो आने दियो, हेट नहीं करता तुम ना सक्सेस नहीं. Exactly. Even I feel that if there is no hatred in the society for a person, then he's not successful, or he hasn't reached the success limit actually. What kind of opportunities and offers do you get as an influencer or content creator? I mean, sponsorship or modeling. Do you guys get it? Actually, he got one modeling. मुझे मॉडलिंग का मिल जाता है. And there's one more coming up soon, inshallah. इंशाल्लाह बात करेंगे. इसके बारे में जल्दी बात करेंगे. Do you guys earn from influencing or content creation, or is there any possibility that influencers can earn from their contents? Like we have earned respect, we have Love, earned fame, love, support. Alhamdulillah, that's more than enough for us. What advice do you guys want to give to youngsters who are planning to become content creators or influencers ahead? What are the key points that you want to suggest them? First of all, please don't copy our videos. हो जने देखती कॉपी कर गए आती, please don't copy. उल्टा तुम्हारा लॉस होता. So and one more thing is स्टार्ट करे के बाद बल्ला की जिनमें मैसेज कर दिया, खासकर पट्टिया के इसमें जाओ ना, थोड़ा उससे अलग रहो. वो माहौल बहुत खराब है. Do you suggest any such thing ki you have to post on particular content only and you have to schedule such and such? Do you have any advice for the youngsters? कंटेंट मतलब ऑडियंस के फर्स्ट हिसाब ऑफ ऑल से रिलीजियस के ऊपर कुछ भी नहीं बोलना. कुछ भी नहीं. नॉट एनी कम्युनिटी, डोंट हर्ट एनी कम्युनिटी. देन कुछ भी क्या तो पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी बोलो ना को. एंड मेक द वीडियोस लाइक ऑडियंस पसंद करना, जो ऑडियंस चाहती वैसे टाइप के वीडियोस बनाना. एंड गाली गलौज नहीं करना. I can't see any beep words in your content. That's what surprises me a lot. And when it comes to your content, it is not only loved by the youngsters. Everybody in Bangalore loves your content. When they scroll, they stop your scroll. This just pause their scroll and they watch your content because it's so family type. It has lots of emotion and everybody can relate your content what you do.
And surprisingly, it's not easy to create such contents. फैमिली टाइप कंटेंट बना है तो घर के बड़े भी देखती हैं, बच्चे भी देखती हैं. बुड्ढे भी तो देखते हैं. What qualities do you think the content creators are missing who don't receive much views or expected views? Because you are experienced ones, and whatever content you post, at least it hits 500,000 within 2 days. And on your experience, you can you suggest some of the tips for the content creators? What are they actually lacking in their contents that they actually don't receive much views? थोड़ा वल्गर होती हैं बहुत जगह, एंड एडिटिंग अच्छी नहीं रहती, बहुत गंदी एडिटिंग रहती है. समटाइम्स साउंड रहता, आवाज़ ही होती है, उनकी आवाज़ सुनकर इरिटेट होता, वैसा रहता. वल्गारिटी एक नहीं लाना बीच में खाली. That's it. एंड एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल रखना नहीं, इतना ये जाता पूरा 100% दियो, फिर उसके बाद एडिट करो, पोस्ट करो, सब उसके ऊपर, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड होता हो. Do you guys have any rivalry towards ex content creator, or are you guys too friendly with every content creators? Do you have any such a rivalry or something? सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से रहते हैं हमारे साथ. व्हेन वी स्टार्टेड तब भी प्यार से थे. सभी बोलते थे बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट ब्रो, कंसिस्टेंट रहो. Oh, what do you think about the Bangalore crowd and your audience? बहुत अच्छी क्राउड है बेंगलोर, बहुत अच्छी, स्पेशली शिवाजी नगर में ओके. बहुत अच्छी है. Now, coming to the fan related questions, this is for you guys especially. What was your first reaction when a fan approached you? And how did you actually react? And how are you reacting towards it now? फर्स्ट फैन अप्रोच कौन सा था? जे मीटअप का. मीटअप का नहीं, उससे पहले भी फैंस आते थे. उससे पहले देवशी तुम्हें वो वीडियो बनानी, वो जो थी कौन सी की वीडियो, वो वीडियो की थी तुम्हें. मैं तुमने कान की देखो हूँ, कान की देखो मैं तुम्हें. ऐसा देखती हूँ, पिक्चर करती, आधे घंटे के बाद वापस है. अब मैं निकलना रहता ना तब आती वापस. ब्रो तुम नाकाम की देखो थे, वो वीडियो बनाए अच्छे हैं वीडियोस, जाते रहो, अभी बनाते रहो, जाते रहो बोलता है. देन मीटअप हुआ. मीटअप में बहुत जने हैं, स्पेशली बॉयज़ बहुत दूर से आए थे. Can you just elaborate or specify the incident happened? सवेरा के पास रखे थे मीटअप हमें, तो फ्यू ऑफ द बॉयज़ केम. Was it an official one? नॉट ऑफिशियल, मिलेंगे ओके. ये तो हमारे फैंस को रहती. We just said our location, इधर आती हैं हमें ये टाइम पे. Then there was like कहते 20 किलोमीटर से है, 15 यशवंतपुर किलोमीटर. से कौन से यलंका वहाँ से है. Was it a photograph or autograph? ऑटोग्राफ उधर से कोई वहाँ देखो जन्नत, सॉरी ये कट कर रहे. एक्चुअली एक है प्लेस, हम उसे जन्नत बोलते हैं. Oh, दैट प्लेस. Addas. Has it ever happened that you attended normal event or marriage function and your fans approached you all of a sudden, and instead of it is an event or family gathering, it becomes your gathering and your fan moment? So is there any such incident that happened to you? हुआ था अल्तीजा में बोल को वहाँ पे. What was the incident all about? एक रैंडमली हमें यून चेक विजिट करे थे अल्तीजारा, एंड पीपल स्टार्टेड टू रिकग्नाइज अस. उसके बाद एक करके पूरे फैमिलीज आना शुरू हुए, पूरे बॉयज़ गर्ल्स सब आना शुरू हुए. सो दैट वाज अ गुड मोमेंट. हम तभी मिलता समना टाइम भी सबको मिलने का. अब इंशाल्लाह आगे अभी बहुत इवेंट्स आने वाले हैं, तभी मिलते रहेंगे. When you guys often travel here and there, do you guys find your fans are coming behind in order to approach you? करते जब जाले रहती हैं तब चीखा मारते हैं, वैसे तो दिल लगा तो नो चलो. आधे जने बोलती हैं दिल लगा लिया. फिर दिल लगी. स्टार्टिंग में सबको कंफ्यूज नाम, दिल लगा लिया, सबको करे नहीं, दिल लगा लिया नहीं, दिल लगा. Were there any particular incident that happened कि your fan just followed you all the while just to take a selfie or photograph, whatever it is? Were there any certain incident happen? हाँ, ये हो गए, बहुत टाइम हो गए. What was your reaction and how did you feel when your fans started making your edits and you have fan pages of Dillaggiyas? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है. देख के हमें पर्सनली देखते सर हारून कॉल करता हूँ मुझे सा, देख आज एडिटर, देख आज अच्छा है, वो अच्छा नहीं एडिटर. How does it feel to have a fan page at a very young age? How do you guys feel at a very young age? You're cracking businesses, you have fan pages, you are stable enough, and you are independent, you earn from content creations, and
How do you feel to have all these such things? एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा एडिट्स आती हैं हमारे को तो ये बहुत छोटी उम्र में हम ना फैन पेजेस बनना शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 20 एज का नहीं हमें बोलते हैं हमारी एज नहीं इट्स ओके हमें हमारी एज बोलते हैं, जो भी है Personally, I have seen some of the fan made edits for Dilaggiya, and the visuals are so stunning. I think the hard works and efforts your fan has put that really matters a lot. वी लव आवर फैंस वेरी मच उनकी तरफ से हमारा फेम है Okay, okay. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम Yeah, exactly. Do you guys reply to your fan pages? Do you reply to your fans? हाँ करते हैं फैंस को देख बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं एक एक को करने होता है हम ना कॉल भी करा लेते हैं और नहीं तो ग्रुप में ऐड करा लेते हैं कॉल करा लेते हैं How did they get your number? नहीं इंस्टा कॉल हाँ Okay. Will it not be a hectic thing for you guys? ठीक ऐसा क्या भी नहीं हम ना ऐसा आता नहीं हुआ बस कॉल करे थे ऐसा दिखता You guys have started a fresh page called as Team Dilaggiya, and I have a doubt, even the audience have the doubt. Is your page really handled by you guys personally, or do you guys have any manager, special team in order to manage your content or pages? हैंडल्ड बाय अस बट मैनेज्ड बाय वन पर्सन Both Team Dilaggiya and main page Dilaggiya. मेन पेज तो नहीं मेन पेज वी बोथ हैंडल मेन पे 80% हमें नहीं That's that 20% be like answering your fans, scheduling your content, posting your content captions, such things, right? Do you guys have any separate accounts in the name of Saad Delvi and Syed Haroon? And do you guys have enough followers in that? नहीं नोन वंस खाली नोन पीपल Is it private or public? Private. Now you guys are famous content creators of Bangalore. Now, how do you manage your timing? I'm talking about when you are with your family, friends, girlfriends, colleagues, etc. How do you manage to take up your personal time apart from the fan moments? How do you do that? बोलो से एक टाइम मैं मॉम को बुला लेके जाने को हूँ 3 girls was just passing by and they was like oh my god Haru my mom was कौन रहो नो यार चप्पल मारती हूँ तुझे कौन वो चकरी तुझे There are a particular incident that you wore mask just in order to hide from your audience. फिर भी आई डोंट नो हाउ कैसा पहचान देंगे तो मैं हैदराबाद में था आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट दैट टाइम तो पूरी फैमिली बैठी है हाँ ब्रेकफास्ट कर लिए सब होगा देन आ रही हूँ ब्रेकफास्ट कर लेके बाद तो आपको हमें तुम्हारे वीडियोस देखती हैं फैंस वो सब पड़ा माय डैड इज देयर एंड ही वाज दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही सॉ मी विद द फैन Okay. सो ही फेल्ट हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह और में 6 लोग भी थे सभी फैमिली में How did you feel at that particular moment? Did you feel I'm doing something? I'm making my parents proud. अच्छा लगा स्पेशली जब मॉम्स के साथ रहती है हमें तब गर्ल्स नहीं आना girls बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ था वो इनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ वो फोटो लेने के टाइम कमर्शियल के कमर्शियल में कमर्शियल मैं एक्चुअली माय मॉम टोल्ड मी उन्होंने आगे थे उन्होंने एकदम अच्छा हो लेट्स टेक अ फोटो ऐसा हो दिल्ला ज्ञान नहीं है ऐसी हो वीडियोस होता बाद मम्मा देख ले क्या मैंने क्या करूँ मैं जा ले जा फोटो ले ले जाऊँ परवाह नहीं है तो ओके जा सच्ची जाऊँ अच्छा गो तो तब ले आ जा बाद में बोला अब एक बार से मैं सामने गई तो फोटोआ गिटवा लेना नहीं मुझे छुपा लगाना Now, at present, how do you guys manage your personal life and not hurting your audience? How do you manage to switch into the personal life as well as the professional life? एक्चुअली वी ट्राई आवर बेस्ट टू नॉट हर्ट देम जब भी हमें रहती हैं किसी भी हालत में रोड में रहती हैं कांधे में रहती हैं फिर भी मिलती हैं हमें How do your fans react when they meet you for the first time? Is it just awkward situation or is it a fascinating situation? नहीं उन लोग खाली देख ले करती कहाँ की देख उन लोग हमें मिलते भी नहीं तुम ना हमें देखी दिल्ला क्या वाले वो नहीं खाली देख ले खड़ती वो टेम्पो हम ना awkward फील होता खाली देख ले खड़ी ना भी आंखों मिल रही भी नहीं बात भी नहीं कर रही Do your fans request you when they meet you to shoot certain videos of such and such genres?
थोड़े हार्ट ब्रोकन है थे कौन की तुम्हें ब्रेकअप क्या बनाती ना अभी मुझे पूछो मैं ब्रेकअप के टिप्स देता हूँ अच्छे से देता हूँ को तो बोल रहे You guys do have a really good mimic style, and I really like it. भाई का भी वो वाला चंद भाई कंगाड़ी आवाज क्या चंद भाई खैरियत बनना प्यारे वे परवानी गया अल्हम्दुलिल्लाह क्या कि पॉडकास्ट शूट कर लेते हैं मैं बच्चे माशाल्लाह बहुत जल्दी आ गई And I got to know that you sing very well, Saad. And can you dedicate a song to your audience? Audience, this is especially for you guys. So, Saad, can you sing few lines? let's just start शुरू करेंगे आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ सबके दिलों में शामिल भी हूँ हंसना हंसा अच्छा वापस पूछ आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ सबके दिलों में शामिल भी हूँ हंसना हंसाना दिल को बताना है बस यही मेरा कसूर वादों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं बादशाह ओ बादशाह बादशाह Let's start with a personal question. How's your personal life before and after Dilaggiya? Is there any changes? a lot has changed Can you elaborate it? yeah before it was like nobody knew us ऐसा कुछ भी बट हमें अब कहाँ भी जाती वहाँ हमारे फैंस रहते हैं ब्रदर्स मिलते हैं हम ना they just pass by and say अस्सलाम वालेकुम and we like oh सलाम कर रही हैं पहचान में आ रही है हमें एंड लॉट्स ऑफ लव लॉट्स ऑफ केयर फैंस हमारे केयर भी करती हैं हमारी जब भी मिलती ऐसा रूडली तो आज तक कोई बात नहीं करे बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे हम ना एक इज्जत से रिस्पेक्ट से बात करते हैं एंड दैट वाज अ थिंग आई लाइक्ड वेरी मच अबाउट माय फैंस What about your life before Dilaggiya? बिफोर दिल्लगिया वो वान चटक अरे अच्छा था पढ़ाई करते क्रिकेट खेलते वेरी ही प्लेज वेरी गुड क्रिकेट Apart from sports, it's studies as always. या स्टडीज़ था देन जो भी पहले करते थे हमें अब कर रही वो हमें अब मतलब वी यूज्ड टू पोस्ट स्टोरीज नाउ अब पोस्ट कर रहे हैं सब पहले स्टोरीज नहीं आते पहले भी दिल्लगियांस करते थे हम What's the most effective advantage you got from Dilaggiya until now? वो है वो यहाँ है लेकिन यहाँ आ रहा है I could sense something. I will tell. According to guys or anybody, fame is equal to a lot of connection that we could get in the future. When you are a famous personality or a content creator, you are easily getting an access to meet all the other content creators and influencers ahead. And you will be bonding with certain people who are really good to you. And you can mingle with them, you can get to know a lot of stuffs in and around. And that's what the most important thing I think a person need in his life. And you can easily access that when you are a content creator or influencer. I mean a famous personality. Is it true according to you? एडम एडवांटेज में हमने ये भी मिला ना लाइक वी आर शूटिंग अ पॉडकास्ट Shooting a podcast, obviously. Yeah. वी गॉट टू मीट यू वेरी गुड गाइस Thank you. एंड द होल टीम To be honest, this part is not scripted. I have to thank from bottom of my heart to my partner and to whole Zoku Tales team for making this podcast possible. To all the influencers out there, if you want to tell your story to your public or to your fans, we are open here. And you can just reach us out at reach@zokumedia.in and we will be sending you an invitation link and you can sit here like Saad and Harun and talk about yourself. Moving to the next question. Who is your idol and which actor inspires you a lot? बचपन से देख ले रहे हैं सर के द फेम ही हैज द वे ही टॉक्स एंड एवरीथिंग इन हिम इज वेरी गुड तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं हम लोग जन Even for me, it's Sake because no one can match that acting, you know. I have watched this movie Bazigar. The scene, the mom and son scene, the way he cries, that's the point where I became his fan. I just bow my head on his acting, and that's just fantastic. इज अ फिलोसोफर एंड डिग्री भी है ना उनकी डॉक्टर डिग्री है
एंड द वन थिंग अबाउट SRK इज उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, एवरी इन्फॉर्मेशन क्या तो भी रंदे लाइक इकोनॉमिक्स का, उसका मार्केटिंग का, एंड इज अ मार्केटिंग किंग ऑल्सो. Are you planning up for something in future? आज तक तो नहीं. No. Inshallah, in future. Inshallah, future with you and Something is coming up soon. So if you are an influencer and you wanna take part in that, then mail us at reach@zokumedia.in ASAP. What are your future plans for Dilaggiya? for the Lagan audience. So we are going to start the YouTube, which YouTube चैनल में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. देन ऑफ कोर्स जितने फॉलोअर्स Yeah. स्विच को ही नेक्स्ट रमज़ान तक इंशाल्लाह हमें वो टच करना. What kind of contents will you be posting on your YouTube channel? YouTube will be posting behind the scenes, फिर व्लॉग Family देन कुछ वो चैलेंजेस रहती नहीं, स्मॉल चैलेंजेस, वो मोस्टली शॉर्ट्स. There is one common phrase you usually use, and I'm gonna use that. आओ चलो बात करेंगे. So today in our podcast, we're gonna use that as आओ कुछ सवाल करेंगे. So let's play some rapid fire round with Dilaggiya. So coming up with the first question you have, are you a coffee person or a tea person? tea. सॉरी कॉफी. Love marriage or arranged marriage? लव. अंडरस्टैंडिंग रहती है. वो फैमिली एक्सेप्ट कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह. Actually, your parents are so cool. Food or fitness? फिटनेस. फूड है तो फिटनेस है. Your favorite food? बिरयानी. फ्राइड राइस. Huh? Fried rice. Huh? Next, whom do you text the most? Oh yeah. I know. India wants to know, and all your audience wants to know. Whom do you text the most? Best friend. Obviously him. Obviously him. दिखाओ वही. Coming up with next, favorite brand. With this question, I will get to know what's your revenue actually. Patrick Fuller. Okay. Yes. Shoes, Nike. Next, a shoe person or a cloth person? Cloth. Both. Favorite movie? जब तक है जान. Pathan. Favorite genre? Romantic. Action. ना खाली फाइटा सीना. Obviously, when I got to know this Jab Tak Hai Jaan, and obviously it's Pathan. Next, the best compliment you have ever received in your life? दाता अच्छे हैं साथ के. Eyes. Next, a sweet person or a savory person? Savory. Savory. Sweet is haram for fitness guys, as we know. The last one, what's that one thing you haven't expressed at all in front of your audience that might be in stories, posts, or whatever it is? That one thing which you want to express but you haven't expressed till date. What is that thing? They'll never They'll never know. That's the end of rapid round. I know it's a little bit short, but we could gather only such comments which were frequently asked. So now I'm gonna ask you final question, which most of the audience are asking you in their comment section, and this is the most awaited one as well. Are you guys single? Yes. Yes. Is there any chance that any fan girl or any girl could approach you and you guys get committed? Is there any chances? No. Something like that. Any chance that your fan girl or audience ending up as your wife? Maybe yes or no. So there are lots of chances. So you can approach, but don't trouble them. That's what I would tell. ऐसा सपोर्ट करते रहो हम ना. प्यार दिखाते रहो. सब वीडियोस में हमें बनाती, तुम ना जैसे वीडियोस बना वैसे बनाती, उससे अच्छी ही बनाती. हेट कमेंट चेक करो उनको. जब वीडियो अच्छी नहीं लगी तो पर्सनली मैसेज करो टीम दिल्लागिया में, ऐसा वीडियो अच्छी नहीं है, दैट हमें निकाल डालती, बिकॉज तुम्हारा गवांका सब कुछ दिल्लागिया. कंटेंट कॉपी करो उनको. खुद का दिमाग लगाओ. जो भी स्टार्ट कर रही कॉपी कर रही है तो भी क्रेडिट. हाँ. वो मेन था. दे आर फ्रॉम दिल्लागिया, सोर्स फ्रॉम दिल्लागिया, ऐसा दे आर लो, बट कॉपी अच्छा एक दो करे चलता पूरे. जो भी सिचुएशन हंदे, अच्छा चाहे वो खुशी का हंदे, गम का हंदे, कौन सा भी हंदे, बात करेंगे. भाई
थैंक यू, सपोर्ट करते रहो. So that's all for today's podcast, and that's a wrap. If you haven't followed Dilaggiyas yet, do follow them. And for more such future podcasts and contents, do subscribe us now and click that bell icon.